नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज वुमेन्स डे की सभी को हार्दिक बधाई है। We would like to communicate our best wishes to all the women, all Matra Shakti in the cosmos, because without Matra Shakti, no creation, no symbiosis can take place in the world. So we are the two aspects of a coin. So we would like to communicate our respect to all the women of the world cosmos. Thank you very much for joining. मैं आदरणीय प्रोफेसर कमलेश वैद्य सर का नमस्कार करता हूँ। मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, अग्निहोत्री सर, किरण जी सभी को प्रणाम करते हुए आज की वक्ता शांतला प्रियदर्शनी जी को नमन करता हूँ और खुशबू पामरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उन्हें भी नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका सभी का जुड़ने के लिए। नेहा भट्ट जी भी जुड़ी हुई है केन्या से, उन्हें भी बहुत बहुत आभार। मैं समय नष्ट न करते हुए आदरणीय प्रोफेसर विष्णु प्रसाद शर्मा जी से उनके स्वागत प्रवचन की प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय विष्णु Namaskar. Namaskar. Hari Om. Good afternoon to everybody. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series. Today we have Women, Health and Beauty AYUSH Care, most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome first Professor T.R. Santala P. Ayurveda Chair, University of Latvia, from Latvia. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Namaskar, Madam. Next, I want to welcome Dr. Sheetal Asutkar, Professor and Head, Department of Cellular Tantra, Mahatma Gandhi Ayurveda College and Hospital and Research Center from Wardha. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Suparna S. Mukherjee, Associate Professor and HOD, Department of Education, School of Humanities from Bolpur. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Hema Malini A., founder, Suraksha Ayurvedic Holistic Healthcare, SN from Germany. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Mrs. Momita Sharma, Director and CEO from Kolkata. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Neha Bhatt, Ayurveda Integrated Holistic Therapy Expert, founder Ayushman BHAV and Health Wellness Center, Kenya, East Africa. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Sudha Parikh, retired Senior Ayurvedic Medical Officer from Jaipur. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Dr. Vanita Sharma from Melbourne. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Khushbu Pamra, Mass Secretary, Mumbai, Assistant Professor, Sanskrit, Samhita, D.Y. Patil School of Ayurveda from Navi, Mumbai. Namaskar, Madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Anaksha S. Pandey, Team Leader from UK.
Namaskar, madam, and welcome you to this Ayush Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Mrs. Monju Agnihotri, ex-senior medical officer, Ayush Female Wings, and ex-in-charge joint director, Uttarakhand Ayurvedic and Unani Service from Haridwar. Namaskar, madam, and welcome you to this Ayush Samriddhi webinar. Next, I am to welcome Mrs. Yashi Sharma, BMS, fourth semester, Sri Sri Ayurved College and Research, Bangalore. Namaskar and welcome you to this Ayush Samriddhi webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this important webinar on women's health and beauty Ayush care. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for your nice words. I would like to invite V.K. Agnihotri, sir, and then I would like to request V.K. Agnihotri, sir, to invite Professor Vaidya Kamlesh Sharma ji. He is also Vice Chancellor of Women Vidyapith, Jyoti Women Vidya University. So, Agnihotri, sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Being an international webinar and also international guests are there, so I would like to maintain the English language for the understandability to all the persons. Well, as we have decided that today is, we are going to celebrate this International Women's Day in a terms of women health and beauty. So first of all, I extend my heartfelt greetings to all the women of world for their presence on the earth and for their contributions for the humanity in many ways, in many forms, in many format, right from the medical sciences to say police personnel and everywhere. So the topic which has been taken today is women's health and beauty. For that, we have to peep into the matter backside and we have to go to Devi Mahatma. There, Durge Smita Harasti Bhisham Shesh Janto Swasthai Smita Mati Mativ Shubham Dadasi. As far as the health is concerned, we worship Goddess Durga for swasthata, for health. That is the link from where we come and think of the health of the women or health of the every living being. At the same time, when we talk about the beauty, we have to again go for worshipping Goddess Durga, that too in Argala Stot, where we worship with the chanting of Rupam Dei, Jayam Dei, Yesho Dei, Malam Jai. So this is what the format of our Indian culture, our textual, our Vedas, our Devi Mahatma and Devi Purana, where we are talking about the root and the health itself, the beauty and the health. This is what our we can say the deep-rooted concept is civilization and mental relaxation for going in the favor of the worship of goddess. And this is what the Women Day is. Women itself, the goddess itself is a woman, and so in that way we have to worship goddess, and we will be having whatever that anybody can desire. With these words, I open this today's discussion presentation on the women's health and beauty. And as per our next instructions given by Professor Pawan Sharma ji, I very humbly and very honorably invite Vaidya Kamlesh Kumar Sharma ji, Vidyarthi, for his greetings and his Arshivachans. Namaskar, thank you. नमस्ते जी। नमस्ते। आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए महिला शक्ति का ही आशीर्वाद लेने दीजिए। परंतु इस अवसर पर चूंकि आपने महिला स्वास्थ्य और सौंदर्य इस विषय को भी इस अवसर के साथ अनुस्यूत किया है, तो मैं थोड़ा सा इन दोनों बातों की प्रासंगिकता, आज महाशिवरात्रि भी है और सौंदर्य का रूपक, सौंदर्य का महत्व कहाँ से हमको प्राप्त होता है, उसकी एक वानगी केवल रख करके मैं विनम्रता के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। कुमार संभवम में जब हम उसका आलोचन करते हैं तो ध्यान में आता है कि माँ पार्वती जब शिव जी को प्रसन्न करने में असफल होती है, तब वह अपनी पीड़ा जाहिर करती है और कहती है कि पिना किना भग्न मरो मनोरथा सती
निनिंद रूपम हृदये न पार्वती। अपने हृदय से वो अपने रूप सौंदर्य की निंदा करती है, क्योंकि अपने स्वरूप सौंदर्य के कारण वो शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पा रही है। और अंत में वो कहती है कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, अर्थात महिलाओं का जो सौंदर्य है अपने प्रियजनों की प्रीति वर्धन के लिए, सौभाग्य जनन के लिए महत्वपूर्ण होती है। और वहां पर उनका यह मानना था कि मेरा ये जो सौंदर्य है इससे मैं पिनाके को अर्थात भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर पाई, इसलिए हृदय से वो दुखी होती है कि धिक्कार है मेरे इस सौंदर्य के ऊपर। ऐसा प्रसंग कुमार संभव में प्राप्त होता है। वस्तुतः उसका एक संदेश भी होता है कि सौंदर्य किसके लिए, मातृशक्ति का सौंदर्य ये सृष्टि के लिए आवश्यक है। भगवान शंकर जब तपस्या में बैठते हैं और तपस्या में बैठने पर सभी देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि अगर शिव पार्वती से कोई संतान नहीं हुई तो हमें सेनापति कैसे प्राप्त होगा। और वे प्रेरित करते हैं कामदेव को कि आप जाइए और शिव जी की तपस्या को भंग करिए। उसका अलग कथानक है, परंतु आज स्वास्थ्य और सौंदर्य ये दोनों एक विषय पर टिके हुए हैं। सौंदर्य तभी है जब स्वास्थ्य है, बिना स्वास्थ्य के सौंदर्य नहीं रह सकता। सौंदर्य के भी कई स्तर है, शारीरिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य, आध्यात्मिक सौंदर्य, वैचारिक सौंदर्य। और इन सब की प्रतिमूर्ति ईश्वर ने स्त्री तत्व में समाहित की है, पुरुष तत्व इससे वंचित है। सृष्टा ने ये सारी खूबियां, ये सारा वैशिष्ट्य जो स्त्री शक्ति मातृशक्ति में समाविष्ट किया है। और आज इस अवसर पर संजोग से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, संजोग से आज शक्ति पूजन, शिव शक्ति पूजन का दिन भी है। इस अवसर पर हम मातृशक्ति में जो सौंदर्य विराजमान है, जिस सारे उस मातृशक्ति के सौंदर्य से सारा संसार, सारा जगत, सारा यूनिवर्स सुंदर दिखाई देता है। ऐसे में उस सौंदर्य के जननी उस मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए आज इस अवसर पर संपूर्ण विश्व की मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज इस अवसर पर मैं अवसर पाकर आप लोगों को महिला शक्ति को सुनने का अवसर ले पा रहा हूँ। इसके लिए मैं पवन जी का, मित्रवर अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये मुझे बार बार स्नेहपूर्वक अवसर देते हैं तो मैं कुछ साझेदार भी बन जाता हूँ। मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आज केवल मातृशक्ति का और हमारी आद्य शक्ति दोनों का ही वंदन का दिन है। बड़ा संयोग अच्छा रहा है। मैं अपनी प्रथम वक्ता लातविया से डॉक्टर शांतला प्रियदर्शनी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर शांतला प्रियदर्शनी जी फॉर हर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। Namaste. Om Namah Shivaya. And it's a great thank you from me to AYUSH SAMRIDDHI for giving me this great opportunity on this very special day. Can I share my screen, please? Sure, sure. Sir, visible? Yes, yes. Okay. So, it being Women's Day, for the International Women's Day, a very happy, healthy, beautiful International Women's Day to everybody. And I congratulate AYUSH SAMRIDDHI for having this beautiful event. And I would be speaking a little bit about what is happening in Latvia. There is a university. Okay. So before I start, I would like to say when we start our day in the morning, we open our palms and pray God for Karagre Vasate Lakshmi, Karamadye Saraswati, Karamule Stite Gopala, but Govinda, but we say Parvati or Durga. And because we have three goddesses in us, we expect that our health, happiness, prosperity, all creative issues should happen. And even in Latvia, we have
three goddesses, almost like Lakshmi, Saraswati, and Durga. It is Dekla, Laima, and Karta. Almost like we have Yama, we have Brahma, we have Indra, we have a lot of similarity between Indian culture and Latvian culture, but it has all changed now to Christianity. So let us go back to our saying, Yatra Naryastu Pujante Ramante Tatra Devataha. So today being International Women's Day, let us celebrate it. In Toriba University, it is a different university than Latvia University. There I had the privilege of visiting it, and they have started a cosmetic clinic which has a diploma wherein facial makeup and all that is taught. It is a 2 year course. Actually, we should remember that in 2021, it was 4571.7 million market size Ayurvedic products for beauty products. But in 2028, it is going to become 180 million dollars. So it's a very huge market, and we need to think that Ayurveda time is now. So we should work on that, and we should be able to make the best of it. These are Latvian girls. Here, Latvia has got more female than men. The percentage of women is more, and most of the time, in very big positions, we have ladies. And then we go to what is happening in Europe is Valentina Tereshkova. Most people would have heard the first lady, first woman in space, and we need to remember her. Then we have this Anusha Ansari, Iranian-born American, first tourist, woman tourist in space. So we have a lot of women going, not lot of women, like 12% of women as tourists or space people, and they will need beauty concepts, beauty things. So it's a challenge and an opportunity for Ayurveda people to think of how skin will age in space and what should be done, how it should be done, and these type of things. So challenges never end, but we have to accept the challenges and the opportunities. So it is when women go to space, definitely they will need beauty products. So this is something which we have to think about. This was Shahnaz Hussain, who made a name for herself in the beauty world, spreading Ayurveda beauty globally. So she was the one who created a lot of beauty products, but her daughter Nilofer made her biography known as Flame. Uh, Shahnaz Hussain was awarded Padma Shri in 2002. But as you have all the stalwarts who spoke before me so eloquently said, beauty goes beyond skin. So if beauty goes beyond skin, Ayurveda speaks about that. We have Rasayana, we have Varnya, we have too many concepts wherein it is the beauty of Ayurveda, wherein we could make use of it and do it. And yoga for health and beauty, then it has to be the Padma Shri awardee, Nanammal, who was even at 99 years, she was doing yoga, and she was awarded Padma Shri. So here we find that this lady was doing yoga until 30 days before her death. So it is yoga that is, we are doing it internationally, International Yoga Day. So also it is for both health and beauty. So I would like to conclude wishing everybody a Mahashivratri and an International Women's Day. Here in Latvia, lot of flowers are being given to women. So it is white tulips that I have purchased for giving to women in Latvia. And before I conclude, it is a very divine Mahashivratri to everybody. Namaste, and thank you very much for giving me this opportunity to speak a few words.
नमस्कार you शांतला very जी, much. जयपुर से कमलेश, कैसे हैं नमस्ते शांतला सर। जी? कैसे हैं मैम आप? मैम Thank you. आप वहीं से अपने व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर्स हमें हम लोग शो कर सकती हैं। हमारे जो लेडी पार्टिसिपेंट्स है उनको तो ऑफर हो जाएगा, which you have हाँ purchased. It can हाँ be सर, done sure sir, virtually. sure. आज शिव शक्ति का जब मैडम ने फोटो दिखा दिया है सर, और बात ऐसी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। माँ को और आद्य पिता शिव को दोनों को नमन है। बहुत अच्छा बोली मैडम आप, आपने एक एक्सीलेंट उदाहरण प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी ओपनिंग रही आज वुमेन्स डे की, आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन भी दिया। थैंक यू अग्निहोत्री सर। Sir, very grateful to you. You have divine voice. I really enjoy listening to your voice, but sometimes I will have classes at the time when you are having your program, so I'll not be able to attend everything, but sometimes later I will hear. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Your association for movement itself makes our journey very strong and beautiful. You So have now, you have remembered all the ladies of world who have been ornamented with our Shri Shri. awards. And also this is wonderful. And also when the Kamlesh ji talked about Bhavani Mahakavi Kalidas की concept, शिव पार्वती जी के लिए कि वो अपनी सुंदरता से दुखी थी, मैं समझता हूँ बाबा तुलसीदास जी लिख देते हैं, सुंदरता मर्याद भवानी, वहां और गिरा अनयन नयन बिलवाणी, उनकी सुंदरता तो अप्रतिम है। ये तो कवि की भावना हो सकती है। बहुत बहुत आप लोगों का मैं अब डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी, very motivational speaker. Welcome. Welcome from Bolpur. Welcome. Yes, sir. Thank you very much for giving me such an opportunity in the AYUSH SAMRIDDHI platform. Today is the two auspicious day. One is the Mahashivaratri, at the same time the International Women's Day. I convey my best regards to the AYUSH SAMRIDDHI who has given me such an opportunity on this platform. The today's topic I would like to discuss the International Women's Day and Tribal Women's Empowerment, a democratic eye shot. So what is this International Women's Day and how the tribes are incorporated within this International Women's Day? Basically, the UNESCO emerged the International Women's Day from the activities of labor movement in the USA, especially the North America and the Europe in 20th century. The first National Women's Day was observed in the USA on 20th February 1909 and was observed in case of the commemoration of the 1908 the government workers strike in New York, during which women protested against the harsh working conditions. In 1945, United Nations affirmed the principle of equality between men and women. Later, on March 8, 1975, during the International Women's Year, UN observed the first official International Women's Day. So why we are celebrating, why we are observing International Women's Day? There should have the significance. Especially the International Women's Day is celebrated to spread the message of gender equality, to create a better society free of gender bias. The day celebrates women and addresses issues such as women's equal rights, violence and abuse against women, and reproductive rights.
At the same time, we can say that women empowerment, especially in the tribal community, the term empowerment has been used to describe a wide range of components. The term has been first used more often to advocate grassroots participation of the people, especially the marginalized, the economic and social and political affairs of the society. The World Bank has defined empowerment is at the expansion of freedom of choice and action. Although women and other disabled, disadvantaged and marginalized group, it is necessary to understand that empowerment of women includes some additional extent and additional elementation and what the given the scope to explore themselves. Empowerment of women is the process of raising above social, spiritual, educational, political, gender, or economic strength of women. It has also emphasized that traditionally backward and unprivileged ones in the society. Empowerment defines the higher literacy level, education, then the prospering the woman power, better healthcare, equal ownership of the productive resources, increased participation in the awareness of rights and responsibilities. At the same time, we can say that it improved the standard of living, self-reliance, self-confidence, and the self-realization. The empowerment of women also determined as women economic, social, and political identity and their weightage. So here in this day, we can assemble here to explore that. The education is the key element which help the tribal women to raise their level of health, nutrition, self-confidence, and enable them to get better jobs and manage them into some productive work, ensure social security, and elevate them from fraudulent activities. Education increases the skill, knowledge, and awareness of their rights and the ability to assert those rights, and also help to reduce the child mortality, at the same time the morbidity, and which raise the empowerment in the new generation and newborns. The literature has pronounced that women education plays a significant role that enhance their participation in socio-economic, socio-cultural, socio-political activities and decision making at family and the community level. The tribal women education created better sustainability, better employability, space, self-confidence, and self-esteem for the tribal women in the study area, especially which have the jungle mahal. At the same time, those who are living in the deep inside the forest and forest ranges. Here, the AYUSH is the very important factor to develop the women empowerment. How it has been? Because the AYUSH itself says that it is a long life production. It is a long orientation with the healthy being. So the women are beautiful. In man kingdom or human kingdom, only the women are very beautiful. But if we can look back into our animal kingdom, where the males are beautiful, but how these differences has happened. These differences has happened in the time immemorial, because our environment had enriched us in the beautifulness, and us giving us the beautifulness in the core heart. That means we should be beautiful in our heart and mind. Then we can develop the society, and then we can generate the generation-wise empowerment from the persons who are basically needed for their livelihood sustenance. Here I can emphasize that the AYUSH has a very good, important, and extended opportunity to generate the woman. At the same time, it is a very good aspect for betterment of the woman being. So today is the day where the coincidence of the Mahashivaratri, at the same time the International Women's Day. This the conjugation, the coincidence give us the better opportunity to the sustenance and sustainability in the society at large. So we should not forget that we are women, we can the weird section, but those who are in the standpoint, those who getting the better opportunity, they could have the extended their hands for those who are not getting opportunity. So tribal women are the future. Tribal women are
our backbone of the nation. They are the fellow citizens. So we all have the responsibility to develop their empowerment and develop their potentiality and to explore the work purposes and the same time the education and literate them for the better world. Thank you very much. Thanks to the Ayush giving me such an opportunity to say something on this auspicious day, the International Women Day 2024. Thank you very much. Thanks to all. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you very much. Very fluent and very informative and very impressive. All. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. So now I would like to request Dr. Neha Bhatt from Kenya. Dr. Neha, am I audible to you? Welcome. Please unmute. Yes. Yeah. Hanji, namaste all. And happy International Women's Day to all and happy Mahashivratri to all. Today, it's a great opportunity from the Ayush gave me to say something about our International Women's Day. So, sir, mine would be a bit, our concept is a bit big. Is it okay? Sure, please continue. Anji. So, yeah. So today, actually, I wanted to explain, I've heard all this expertise, they are doing presentation very nicely. Today, I wanted to explain which kind of health sector us ladies, we are suffering from, and we need to work on it. So from here, let me ask you your permission to start my presentation. Sure. So, yeah, thank you, sir. So today is International Day. Women's International Day of 2024 on 8th March, we actually celebrate every year this day. So today's woman is a multi-faceted who takes care of the family as well as her aspirations. There are times when she falls prey to lifestyle diseases. Women health problems are on the rise, partly because of the constant race against the time and partly due to the sheer ignorance. International Women's Day is celebrated today on 8th March. Recognize the many fates of the modern women from the caretaker to professional. There is a recent increase of health issues among women, partly due to the lifestyle choices, partly due to the lack of knowledge. And it is no secret that women have to deal with a lot of health issues than men. Simply don't have to worry about from the menopause to osteoporosis and everything in between. There are a lot of issues that women have to keep an eye out for. However, the good news is that there's a lot of things that women can do in order to prevent themselves from getting these diseases. From here now, let's discuss common health issues of women and the tips that how can women, we can prevent ourselves from getting disease. Most popular these days, we are suffering from, ladies, we are suffering from, especially when you are on your 40s and up, the cervical issues, cervical cancer. The Lancet study reveals that India has the highest number of cervical cancer cases in Asia, followed by China. Out of the 40% of cervical cancer deaths globally, 23% are from India only, and 341,831 deaths reported worldwide. India announced for the 21% earlier declaration that the key of lowering the figures, a simple test called pap smear can helps to detect the cervical cancer and improve the chances to treatment. Regular pap smear after the age of 35 can provide cervical cancer prevention opportunities. So for that, we have this, as we all know, this cancer, cervical cancer,
is caused because the human papilloma virus, and there's a pap scan test also and papilloma test also. If we can do it regularly in the interval of 1 to 2 years after your 35-year reaching, it can help us to survive from this cancer. Next most important disease we are facing, ladies are facing, it's a breast cancer. So over the past decade, cases of breast cancer in India have dramatically increased, especially in the young age, especially in the younger age group. To help detect it early, health professional recommended testings, methods such as breast screening and sonomammography, and a Globocom 2020 studied estimated that every 4 minutes an Indian woman is diagnosed with the breast cancer, making the most common type of cancer among the women, with approximately 1.78 lakhs cases reported each year for the breast cancer among women. To improve the diagnosis rate, regular health checkups and key, along with the breast self-examination, which is we call as BSE, which improve the set process that should be conducted at the same time every month through BSC and regular healthcare screening. When dedicated early treatment for the breast cancer becomes easier. So with the breast cancer, the important cause why we are leading to breast cancer these days, at the early age of 40, from 35 to 40 years, the normal causes are our lifestyle, which lifestyle we are living into, the late marriage we are getting into, late children, then more stress out, generally more intensive, generally more interactive with their mothers also, and astringent hormone related to the developed in breast. So also some another reason which are very normal, which usually us ladies we ignore sometimes, that is keeping phone in the blouse, sometimes exposed to the radiation, more x-rays, because we are keeping our mobile sets in our blouse, the different ideas after that. And especially, you know, when we are wearing a bra, sometimes we are wearing a low wired bra, and also at night also when you are sleeping with this kind of bras and all these. And another reason is when ladies are using more fragrances, creams under the breast, and all these things are causes of the breast cancer. So we need to take care of our health so that we can actually prevent ourselves. So this thing needs actually what do you call some kind of education amongst ladies. So that's when we can only able to prevent over this. Now, next cause is PCOS, which is polycystic ovarian syndrome. You can see these days with the young girls also, you can find this problem. Of course, again, the cause is our lifestyle, which we are living into these days. Some women in their reproductive age also develop a hormonal disorder called PCOS. And the number just kept growing all through. PCOS can be managed with the simple lifestyle changes, which I've already mentioned. All this is only because of our lifestyle we are living into. Not enough attention has been paid to the raising awareness about. It's estimated that there is 20% of Indian women suffer from it. And if the condition isn't mentioned in time, it can have a serious consequences of their health. Signs like irregular period, some unwanted hair growth, and obesity can appear in a young people can suffer, while older ones may experience that infertility, miscarriages, etc. But there's a hope. Making minor everyday adjustment to the diet and lifestyle is the key managing to PCOS, which is very important to manage our diet. Like we always say in our Ayurveda, it's always advisable to do once in a week fast, or you can avoid your sapa, which is dinner.
sometimes, which is with this simple lifestyle changes, we can actually which can actually what do you call, we can actually work on our PCOS, PCOD kind of things we are suffering into. And this PCOS actually causes because of the small cyst form in the ovaries during the ovulation. This cyst even, this is actually a hormonal disorder also, sometimes a metabolic disorder, and large ovary size due to the hormonal imbalance. And all the eggs started mature in the quality, but it's no ovulation in there. And that turns into a cyst, which can rupture any time. And actually also the excessive production of insulin in the ladies, which can produce androgen hormone, which is a male hormone, cause of excessive, male hormone, which causes this kind of PCOS and PCOD. Again, infertility. This is one of the common cause of the concern, especially in younger women. PCOS can lead to the infertility, as I've already mentioned this, and it is a becoming of a more relevant what time infertility itself can be caused by the stress also, hormonal imbalance also, environmental pollution also, and even the late marriages, as I've already mentioned in the breast cancer. These are the same causes, same reasons why these women in this era, we are facing all this problem, and we really need to work on it. The another cause is premature menopause. Because of the currently prevalent sedentary and the stressful lifestyle, premature menopause is on the rise side. Its long-term health complications can include conditions like the infertility, cardiovascular diseases, osteoporosis, and heart and brain stroke also. Heart diseases, again, the very upcoming symptoms in early ages, women around 35 to 40 years. Women's hearts are so special, and that's why it is important for them to stay healthy. After menopause, the risk of heart diseases rises significantly. Like, make sure we can keep our hearts in a top of condition in India. 1 crore deaths are reported annually due to the cardiovascular disease. 20.3% of those deaths are men, while 16.9% are women. So ladies, let's join together and take control of our heart. After all women die from heart-related disease issues than men each year. And don't forget, symptoms of the coronary artery disease and heart attack can be different for women than men. So make sure that you know the signs. Osteoporosis, again, the bone problem after menopause. After when you have an irregular period, this is the most common cause because of the calcium, lacking of calcium in our body. So according to the World Health Organization, WHO statistics, 30% of the postmenopausal women who have been diagnosed with osteoporosis, the number is very higher, 61 million people, with 80% of them being women only, have been affected. According to the WHO, osteoporosis is the second most serious health issue seen globally these days. Of course, the lifestyle we are living in, the method of having food, the method of eating food, this causes osteoporosis. The bone density is maintained by the hormone called estrogen, which is very important for ladies, this estrogen hormone. In a normal aging process, after 35 years, estrogen level drops. This initiates degenerative changes in bones. Regular health checkup for women, that includes bone densitometry test, will help early detection of these changes. And of course, in the regular cases, we need to have a special diet of calcium, which we can include extra. After age of 35 to 40, we need to concentrate on this diet. And we go forward. Next step is stress. Sometimes we women, we feel like we are a power women
one-man army. But I think this is the time we need to stop doing that. We need to stop thinking over that. We can do what we can do. You're not here to convince everyone. Please look after yourself. One of the fastest growing economics, thanks to the pool of the education and talented women. However, the Nestle survey of 6,500 women across 21 countries showed the Indian women are most stressed in the world. 87% of Indian women said they felt stressed most of the time. And 82% reported that they have no time to relax. And this is very true because as we are all doctors here, we know most of the cases from 35 to 40 years of women's, we are treating them for the stress, anxiety, and depression. This is the reason because we feel like we need to do everything and we can do everything, which is not actually true. So, and next we are dealing to the mental health issues, which is depression, anxiety, what I have just mentioned here. Women are known have to be 50% increased risk of depression and anxiety. While India is becoming one of the fastest growing economies. Excuse me, sir. Sir, is it okay? It is going a bit long. Hello. Sir, Please is it continue, okay if I madam. can? Yes, please, boliye. Okay, so I can finish. Yeah, it's going a bit long, but many topics only remaining. 5 minutes. Okay. So mental health issues with the depression and anxiety. So while Indian women is becoming one of the fastest growing economics, 87% women was reported feeling stress from external expectations. Depression and anxiety are major due to the hormone changes and the stress for the family and the personal trauma, but are unfortunately still seen as a madness. Not to forget that these conditions could lead to the further complications like a suicidal tendencies, societal tendencies. And so we need to provide a more program and a discussion about the depression and the anxiety level increasing in age group of 30 to 35 to 40 ladies. Obesity, again, obesity is another reason because of same anxiety and depression and stress. Incidence of obesity in women have increased. Obesity can increase the risk of certain cancers such as a pancreas, liver, gallbladder, esophagus, thyroid, and ovarian and other cancers. Of the few health condition tips on women's health can prevent their sufferings. The following health lifestyle women can keep themselves healthy and disease-free. Women are homemakers in the trusty scenes. We must show our appreciation for their work and ensure that there is awareness surrounding women's health. If you don't mind, I want to share something. There are some common yoga in brief, practice. madam, in brief. Speakers Okay. are there. In brief. So I will not share the screen. I'll just discuss the only yoga asanas which women can do, which can prevent their health from all these diseases they are facing through. So there yoga asana called Vipreet Karni, which really helps ladies for their mental health. And there is a Bhadra asana, which gives relief from the pain, during pain, and for some hormones relief. Priyankasana for during weight gain, you can do this around the abdominal area. It can give you a relief. Matsyasana is the best asana to give you a relief during pain season. And there is another mudra called Yoni Mudra, which is very beneficial for ladies during these ladies. And because of the time, I can say thanks to all. And again, happy Shivratri and happy Women's Day to all. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you very much for your blessings to the stage. Agnihotri, sir. Thank you, Professor Sharma, and thank you, Dr. Neha. You have covered all the areas with the problems and their solution as well. So Yogasana is the one contribution which can keep the body healthy and also be able to avoid the untoward situations which are usually occurring through the advancement of the age. So thank you so much. So now I would like to request Dr. Khushbu Pamra, Dr. Khushbu from Mumbai,
D.Y. Patel Ayurvedic College. Dr. Khushbu, welcome. Today is your day. Thank you so much, sir. Very good afternoon to one and all. Happy Women's Day and happy Mahashivratri to everyone. I would like to convey my heartfelt gratitude to Pawan Kumar, sir, for giving us this opportunity so that we can share our thoughts. And I would like to thank Dr. Neha as well, as she has covered almost all the major complications, all the problems which women are facing at present. I would like to share this platform for the awareness of the menopause or perimenopausal symptoms which women are still facing. So, mostly perimenopause or menopause is the age where, at the mostly it was seen by the age of 45 to 50. In this age group, it was starting, but because of today's lifestyle, we are seeing that by the late 30s, that is in 38 to 40, also there is some signs and symptoms of perimenopausal symptoms which are seen. So these perimenopausal symptoms are including both that, such as physical signs and symptoms and emotional and psychological signs and symptoms. In physical signs and symptoms, we are seeing there is dryness in the skin, there is vaginal itching, weight gain, and in emotional, that is in manasik lakshan, what we are seeing, we see some mood swings, hot flushes, irritability, so, for a specific diagnosis, we don't see that there is a specific diagnosis of a specific test for conditioning it as a menopause, but various signs and symptoms collectively cause the perimenopausal or menopausal phase. So, first, I would like to address the heavy bleeding. Heavy bleeding there may be different causative factors which may cause heavy bleeding. It may be due to endometriosis. It may be due to fibroids which are present. There are certain drugs mentioned in Ayurveda, such as there can be usage of lodra chal, which is kashay rasatmak. So it can be helped in bulky uterus as well. Nag keshar, ashok, musta. Musta here it can be used as it is a jaliya dravya. So it can be helped in heavy bleeding. Secondly, we are seeing the causative factor, which is fibroid, the size of the fibroid and the location of the fibroid. Depending on the size of the fibroid, can be certain surgical or therapeutical treatment can be done. If the size of the fibroid is much more larger, there can be a surgical treatment. And secondly, depending on the location, that is whether it is a subserosal or whether it is submucosal or intramucosal, where the fibroid is actually present, depending on that, we can do the treatment. Similarly, we can see that Kanchanar or Komadnaki, how its name is only mentioned, that this drug is, its structure is based as the nail of the cock. It helps in the lekhan, that is the scraping of the fibroid. Second, lepa chikitsa. Lepa chikitsa can be done as atasi upnaha or gulmohar lep. Next symptom what we see in menopause is dry skin or melasma, or we can see a proper black color discoloration, or literally we can see a butterfly shape around the cheeks and nose. So for this, this is the majorly because of vata vruddhi. In vata vruddhi, we can use sneha, that is kumkumadi tail or any grutha like kalyana gruth, chatadhauta gruth, or durva gruth. All these can be used as a sneha for local application. Next symptom which we see is osteoporosis. In osteoporosis also there is asthi viralta. Because of there is calcium deficiency in menopause, and to rectify that we are using lac or dinker. Dinker, that is the niryas of the bubble tree. So all these agents which things which we are using in our ahar also. So these things can rectify our osteoporotic change. Secondly, Our there noise is volume usage of there, Hariom. secondly there is secondly there is use of लेकिन shigru also. speaker on ज्यादा Shigru, नहीं that हो is drumsticks which is used. So this is also used in osteoporotic changes. Other than all this, I would 8 like बजे to की 9 mention बजे that there is ठीक है ठीक है Okay. here I would like to mention in psychological symptoms, there is empty nest syndrome. Now, what is empty nest syndrome? Like how we see that there is a bird, that the bird is taking care of all the nests.
And then when the eggs are broken and when the birds flew away, the bird is still feeling that the nest is empty. Similarly, it is with our mothers or our females also. When they are taking care of the child and when the child is growing up and the child is all independent about taking care of themselves, still there is this emptiness syndrome in the female. That is, they are worried, the anxiety level increases, the depression level increases. So all these signs and symptoms can also be managed in Ayurveda. That is, certain drugs like Brahmi, Jatamasi, Shankapushpi, all these drugs can be used as a nasya or as a medhya rasayana. Lastly, I would like to mention that panchakarma can be done. Panchakarma, that is even nasya or basti, whatever these signs and symptoms are seen in vata vyadhi or in fibroid. So certain specific bastis can be given. And overall, to summarize, like Dr. Neha had also mentioned that yogasan or pranayam is the key to help all the lifestyle diseases. So firstly, in all the yogasans which are helping to affect the lower abdomen or lower back region. So there is Pavan Muktasan, there is Shashankasan, Makarasan, all the asans which help in the lower abdomen muscles that can be used in perimenopause or postmenopause. Lastly, I would like to mention about pranayam. Pranayam, that is Anulom Vilom can be done, Brahmri can be done, and as there is in menopause, there is Rakta Dushti or Rakta Vruddhi. So there is already Pitta Prakop. So to rectify that, we can be used as Shitali and Sitakari also. So there is Pitta Shamak, जैसे पित्त का प्रकोप है, so that it can be used as a Pitta Shamak. And overall, I would like to conclude that all the basic health has to be maintained. Like the definition of health is mentioned like Samadosha, Samadnisha, Samadhatu, Malakriya, Prasanna Atma Indriya Manam, Swastha Ithi Abhidiyate. So if all the dosha, all the dhatu, mala, atma, indriya, and man, everything is maintained, that is only called a proper definition of health. If even the mana is vikrut, or even atma is vikrut, or even indriya is not there proper, so even the sharirik stability is of no use. The balance of sharirik and psychological, both the balance is equally important for maintaining a healthy lifestyle. So with this, I would like to conclude, and I would like to thank Dr. Pavan Kumar sir also for giving me this opportunity. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Khushbu. Thank you very much. बहुत अच्छा कहा आपने, जो छूट गया था पूर्व वक्ताओं से वो आपने कवर अप किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. थैंक यू वेरी मच. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर वनीता शर्मा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न. डॉक्टर वनीता जी, दो शी इज इन ऑन द वे. वेलकम, वेलकम मैडम. प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट मैडम. Sorry, namaste. Namaste, Pavan ji. Dr. Pavan, नमस्कार. thank you. Sorry, जैसे मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, like क्योंकि अभी मैं आज सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. पहले तो अपना शिवरात्रि की, जो कि हमारा धर्म है, हमारा सबसे पहला कर्म है भगवान को याद करना. और आज तो शिवरात्रि है, तो शिव शक्ति, और फिर हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. तो शिव की शक्ति और आधार, लाइक हम सब उसी से हमारा अस्तित्व है. तो हम एज अ इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे शिवरात्रि साथ में, उससे शुभ दिन हो ही नहीं सकता. तो आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट every woman across globally, and especially in India, Australia, anywhere in the world, like a very happy International Women's Day.
maintain your strength, maintain your aura, and be courageous, and maintain like all the respect men should give to the woman, because of woman is a man. So even in the word woman, the man is uh, incorporated in the woman. So शिव और शक्ति, so ये दोनों एक दूसरे का आधार हैं, एक दूसरे का साथ है, और चाहे वो पिता के रूप में है, या वो भाई के रूप में है, या पति के रूप में है, या जो भी है, बंधु है, साथी है, हमें सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना है कि हमें एक औरत होते हुए हमें शिव की आधार बनना है, और हमें अपना अस्तित्व भी नहीं खोना है, लेकिन एक इज्जत बना के रखनी है दोनों ही धीरों में. तो all I want to say is whoever is together and be merrier, be happy, and stay bonded, and all the men, I just like request to respect the women equally as the women respect the men. So इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती. मैं अभी खुद शिव के मंदिर ही जा रही हूँ, रास्ते में हूँ. तो आज मैंने सोचा इससे शुभ दिन हो ही नहीं सकता, तो मैं काम के बाद सीधा अभी मंदिर ही जा रही हूँ. तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक. मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ. तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. और आयुर्वेद में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य अपना मेंटेन करके रखें, आयुर्वेद से रखें. स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च. राइट. एंड उसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर साहिबा भी बोल रही थी, है ना, तो हमारा जो है सम दोष सम क्रिया, सम अग्निष्ट सम धातु मल क्रिया, राइट, वो सब जो है हमारा आयुर्वेद का आधार है. और आयुर्वेद हमारा वेद है. तो हमें आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, उसको भी एक पूजा का स्थान देना है, और अपने धर्म को भी निभाना है, चाहे वो एक औरत का धर्म है या वो शिव की शक्ति का है. थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको. थैंक यू पवन बहुत जी. बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार. मैं आपको नमन करता हूं कि आप रास्ते से भी जुड़े, और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे आज शिवरात्रि के दिन. ब्लेसिंग्स टू यू. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत मैं धन्यवाद. आदरणीय डॉक्टर मंजू अग्निहोत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं. आदरणीय मैडम अग्निहोत्री मैडम यदि कंफर्टेबल हैं तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं. प्रणाम मैडम. नमस्कार भाभी. अब देखिए, शिव शक्ति के तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं. शिव और शक्ति दोनों ही सामने बैठे हैं, तो और क्या चाहिए. अनम्यूट कीजिए अग्निहोत्री जी. मेरे से जो पहले जितनी भी महिलाओं ने महिला दिवस के ऊपर बोला, बहुत कुछ कह दिया उन लोगों ने, पर मेरे मन में बस हमेशा एक प्रश्न आता है कि हमारे देश में महिला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी. क्योंकि महिलाओं की अनदेखी की गई हमेशा. अंग्रेजों के जमाने में जब मुस्लिम भारत के अंदर आए तो हमारे देश की महिलाओं को बहुत ही दबा छुपा के रखा जाता था. वो लोग उठा ले जाते थे, महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हुए. इसलिए महिलाओं को, जब ये लोग चले गए, तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ी. वरना हिंदुस्तान ऐसा देश नहीं था पहले जहाँ पे महिलाओं की अनदेखी की हुई. एक से एक महिलाएं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हमारे देश में हुई हैं. तो मैं सिर्फ, बहुत कुछ कह दिया गया है महिला स्वास्थ्य के बारे में,
और स्वास्थ्य ही एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ही अग्निहोत्री जल्द जी, महिला दिवस है, कैमरे का एंगल मैडम की तरफ करिए, आपने फोकस अपने ऊपर ही किया हुआ है। आपके मार्गदर्शन का यावत जीवन स्मरण रखूंगा। जी, अ, धन्यवाद। मैं परिदृश्य से विलुप्त हो जाता हूँ। नहीं, विलुप्त न होइए। मिनार्की टू मीनोपॉज, हमारी महिलाओं के लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले मिनार्की, जन्म हुआ तब तो बालिका होती है, मिनार्की, फिर वो यंगहुड में आती है, उसके बाद मीनोपॉज। ये तीनों स्टेजेस ऐसी होती है जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मीनार्की से जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो एक बैलेंस डाइट होती है। अगर हम अपने घर में बैलेंस डाइट का पूरा ध्यान रखें, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन और पानी की अच्छी सी मात्रा, अगर हम हर बच्चे के खान पान में इन चीजों का ध्यान रखें, इनका रेशियो सही रखें, तो हमारे यहाँ बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चाहे वो लड़कियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो मीनोपॉज की स्त्रियां हों, उनको अपना स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत पड़ती है। और बैलेंस डाइट को मेंटेन करना घर में सभी का कर्तव्य है, चाहे वो उनके पति हों, पति के रूप में, जैसा कि अभी मैडम ने बोला कि वो शिव शक्ति, पति को शिव के रूप में देखें, अपने भाइयों को देखें, जो करता धरता है परिवार का, जो घर में सारा सामान लाता है, वो पूरी बैलेंस डाइट का बच्चों इस हिसाब से लाए कि बैलेंस डाइट बच्चों को मिलती रहे, महिलाओं को मिलती रहे, और उन्होंने खाया कि नहीं खाया, इस चीज का बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। अक्सर क्या होता है कि महिलाएं सबको खिला दिया, अपने लिए बचा या नहीं बचा, चलो कोई बात नहीं, हम तो इसी से गुजारा कर लेंगे, फिर अपने लिए ध्यान नहीं देती हैं। हमारे साथ भी हुआ है ऐसा। ऐसा नहीं है कि हम अलग है इस चीज से, डॉक्टर होते हुए भी और खुद अर्निंग मेंबर होते हुए भी हमने अपने परिवार को ज्यादा महत्व दिया अपने से। तो मैं ही महिला से यही कहना चाहती हूँ कि अपने अपना भी ख्याल रखें। महिला शक्ति आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। और जैसे मैडम ने बोला था कि महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है, इसके लिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इससे बचने के लिए वैक्सीन आते हैं। एचपीवी वैक्सीन लड़कियों को 12 साल की उम्र में लगाया जाए, 12 से 16 की साल में। अगर उस उम्र में नहीं भी लगाया गया तो एचपीवी वैक्सीन अगर 26 साल तक भी लगवा दिया जाए तो ये एचपीवी वायरस सर्विक्स में एंटर नहीं करेगा और सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। और भी जेनिटल कैंसर, खाली सर्वाइकल ही नहीं, जेनिटल कैंसर से भी हम बच सकते हैं। और अपने मीनार्की के दिनों में से ही लड़कियों को हम एजुकेट करते हैं कि उनको पीरियड्स के टाइम पे जब मेंसेस हो रहा होता है तो किस तरीके से उनको रहना है, हाइजीन का कितना ख्याल रखना है, अपने योनि में कोई संक्रमण ना आ जाए उसके लिए हमें कितना ध्यान देना है लड़कियों को। मतलब मैं इसमें बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए। बस यही कहना चाहूंगी कि अपने शरीर का ध्यान रखें, साफ सफाई से रहें, बैलेंस डाइट खाएं, स्वस्थ रहें। और एक जो क्रोध है, किसी भी बात पे गुस्सा होना, क्रोध से बचें, शांत स्वभाव रहें, अपनी बात धीरे से कहें, जिससे कि आपके दिमाग में एंजाइटी ना आए, डिप्रेशन ना आए। ज्यादा बोल के गुस्सा कर करके इंसान फिर डिप्रेशन में चला जाता है जब कोई उस चीज को ध्यान नहीं देता। तो बहुत ही जरूरी है एक अपना स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए स्वस्थ रहें, गुस्सा कम करें, हेल्दी खाना खाएं। और जो महिला उत्पीड़न होता है घर के अंदर से ही शुरू होता है, महिला उत्पीड़न, उसका बहुत ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं का उत्पीड़न चाहे वो घर में घर के मेंबर्स हैं, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे वो ऑफिस के अंदर है, इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे वो उत्पीड़न किसी भी तरीके का हो, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी भी तरीके का उत्पीड़न, एक महिला बहुत कोमल हृदय होती है, वो इन चीजों को नहीं सह पाती, वो अपनी जी जान से पूरा काम करती है। और अगर इस तरीके का उत्पीड़न उनको पुरुषों के द्वारा मिलता है या अपने सीनियर्स के द्वारा मिलता है तो वो असहनीय हो जाता है उनके लिए। और इससे वो उनके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की अक्षमता आ जाती है, वो अपने पूरा जो फुल देना चाहिए काम वो नहीं दे पाती है। जब तक कि उनको खुला वातावरण नहीं मिलेगा, वो उनको सुरक्षित रहना है, उनको इधर उधर की छेड़छाड़ से मुक्त रखने के लिए उनको स्ट्रांग बनाना है, घर से ही स्ट्रांग बना के भेजना है। यही बहुत कुछ है कहने को, मैं
बहुत टाइम भी नहीं है इतना जो मैं बहुत कुछ कह पाऊँ। और बस अपना स्वास्थ्य मीनार टू मीनोपॉज अपना स्वास्थ्य मेंटेन करें, और मीनोपॉज के टाइम पे अपना स्वास्थ्य ज्यादा ध्यान रखें, जैसे कि इस समय जो जिस तरीके की बीमारियां महिलाओं में लगने लगती हैं उनसे बचा जा सके। बस हेल्थ एंड ब्यूटी, अब ब्यूटी वाला पार्ट, ब्यूटी ये तो हेल्थ हुई ना, हेल्थ से प्रिकॉशन है। ब्यूटी अगर महिला और ब्यूटी ये सिनोनिमस है ना। ब्यूटी बहुत जरूरी है। ब्यूटी मानसिक भी होती है, शारीरिक भी होती है, और कुछ तो जन्मजात भगवान को सुंदरी भेजते हैं बना के, और कुछ लोग जो है वो अपने को अपना बिहेवियर अच्छा रख के, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करके, अपनी बैलेंस डाइट रख के, फ्रूट डाइट ज्यादा लेके, महिलाओं को चाहिए फ्रूट डाइट में, जैसे उनको एनीमिया बहुत ज्यादा होता है तो चुकंदर का सेवन करें, चुकंदर गाजर का जूस पिए, कच्चा खाएं, उससे उनके आंखों की दृष्टि और स्किन का ग्लो बना रहेगा, और खून की कमी तो होने ही नहीं पाएगी। साथ में विटामिन जो कि बैलेंस डाइट में मैंने पहले ही बता दिया, उन चीजों की तो जरूरत है ही। उससे खूबसूरती भी बनी रहेगी, स्वास्थ्य भी बना रहेगा, एनीमिया नहीं होगा, और खुश रहे। सबसे बड़ी बात है खुश रह के इंसान अपने को 10-20 साल उम्र में छोटा दिखा सकता है। बस गुस्सा ना करें। और शिवरात्रि की पूजा पाठ, और शिवरात्रि हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें हम लोग शिव शक्ति की पूजा करते हैं, शिव पार्वती की। जिस तरीके से माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त किया था, हर लड़की अपना एक मन में एक रखती है कि मुझे ऐसा पति मिले, मेरा जीवन साथी ऐसा हो, भगवान उसको उसी तरीके से दें। शिव जी से ये प्रार्थना है कि हर महिला को खुश रखें, और जैसे उन्होंने पार्वती जी को रखा ऐसे ही सबको रखें। खूबसूरती तो खान पान से और अच्छे व्यवहार से होती है, दो ही चीजें हैं इसकी। बस अपने को क्रोधित ना करें, और खान पान अच्छा रखें, सबके संग हंस बोले, इसी से आपकी खूबसूरती हमेशा मेंटेन रहे। धन्यवाद। आपको तो रोज बोलना चाहिए साहब, आप कहाँ छुपे रहते हैं? आपको तो रोज बोलना चाहिए। आप तो इतना सुंदर और धारा प्रवाह बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं, मोटिवेशनल बोलते हैं। इतना मैंने इस पे इतने हर साल मेरे लेक्चर होते थे, अब मैं थोड़ा कम कर दिया है जाना, कोविड के बाद से। बहुत महिला दिवस पे तो मेरे को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी, हर जगह बुलाते थे मुझे। ठीक है, चलिए पर जी, मैं मंत्र ज्यादा नहीं बोल रहा, सब भी बस ये पहले बोला है, उन्होंने काफी कुछ वो लोग कह चुके, उनको रिपीट करने से भी क्या फायदा है। चलिए अब आप आज्ञा दें तो शशि श्रोत्री जी को इनवाइट करें। हाँ वो तो इंतजार में है ही वो है, तो गा देंगी, वो तो अभी बैठी थी वो ना, तो इतनी जल्दी कविता बनाती है 2 मिनट के अंदर। ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ तो आदरणीय अभी शशि जी, वीडियो में नहीं है। हाँ, आ गया, यस, कल लाल थे। नमस्कार। मैं ब्यूटी टिप्स पे तो नहीं बोलूंगी कुछ भी बोलना चाहिए ब्यूटी तो क्योंकि मुझे तो हर कोई सुंदर दिखाई देता है। तो अपनी बिटिया को लुआ देना ब्यूटी टिप्स पर, और क्या। मैं महिला दिवस पे ही कुछ सुनाऊंगी। बहुत कॉन्फिडेंस से आती हो। हाँ सबसे पहले मैं शिवरात्रि की आप सबको बधाई देती हूँ, शिव पूजन की बधाई देती हूँ, और उस महिला दिवस की अपनी बहन जी को बधाई देती हूँ, बैठी हैं सामने और बहुत अच्छा बोला, मैंने पूरा सुना। आदमी अगर खुश रहेगा इंसान तो वो अपने आप ही सुंदर दिखाई देगा, लेकिन उड़ता रहेगा ना तो वो सुंदर भी होगा तो बदसूरत दिखाई देगा। इसलिए घर के परिवार के लोगों को चाहिए कि अपने घर की महिलाओं को हमेशा प्रसन्न रखें, खुश बिजली चली। तो नारी के ऊपर ही मैं महिला दिवस के ऊपर कविता सुनावे नारी पे अपने ब्यूटी टिप्स पे तो दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। ये तो बताया महिला नहीं, बताया नहीं पहले। मैं भी बताने वाली थी, मैंने नहीं बताया। बता मैं भी बताने वाली थी, एक बार कोई बोल चुका उसको रिपीट करने से क्या फायदा। नारी के ऊपर नारी 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 कर रहा, नारी नारी कर रहा पूरा देश है आज,
नारी नारी कर रहा पूरा देश है आज। ऊपर ऊपर चार दिखे, ऊपर ऊपर चार दिखे, अंदर मीठी खाद, अंदर मीठी खाद। गर समाज हर रोज दे, गर समाज हर रोज दे नारी को सम्मान, गर समाज हर रोज दे नारी को सम्मान, तो इस महिला दिवस की नहीं जरूरत आज, तो इस महिला दिवस की नहीं जरूरत आज। मैंने लक्ष्मीबाई के ऊपर कुछ लिखा है, वो आपको सुना। जीवन में इतने दुख होंगे, जीवन में इतने दुख होंगे, एहसास नहीं था उसको। जीवन में इतने दुख होंगे, एहसास नहीं था उसको। बर्छी तीर कमान चलाना सिर्फ पसंद था उसको, बर्छी तीर कमान चलाना सिर्फ पसंद था उसको। कभी नहीं खेली वो, कभी नहीं खेली वो गुड्डे गुड़ियों के संग, कभी नहीं खेली वो गुड्डे गुड़ियों के संग। रण में जाकर युद्ध करना सिर्फ पसंद था उसको, रण में जाकर युद्ध करना सिर्फ पसंद था उसको। रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। लेकर पीठ अपने पालक को, लेकर पीठ अपने पालक को रण की बिगुल बजाई थी, लेकर पीठ अपने बालक को रण की बिगुल बजाई थी। अंग्रेजों ने कई तरह की चालें चलकर उसको भरमाया था, अंग्रेजों ने कई तरह की चालें चलकर उसको भरमाया था, पर वह अडिग रही, पर वह अडिग रही अपने पद पर, झांसी की रानी कहलाई। कहाँ शक्ति में कम होती है, कहाँ शक्ति में कम होती है, यह भी बता दिया उसने। कहाँ शक्ति में कम होती है महिला, यह भी बता दिया उसने। जीत हार जीवन के दो पहलू, ये भी जता दिया उसने, ये भी जता दिया उसने। अगर लक्ष्य पर अडिग रहो, अगर लक्ष्य पर अडिग रहो तो हासिल सब हो जाता है, अगर लक्ष्य पर अडिग रहो तो हासिल सब हो जाता है। जीवन अपना दांव लगा देश का इतिहास बदल दिया, अपना जीवन दांव लगाकर देश का इतिहास बदल दिया उसने। ऐसी वीर महिलाओं को दिल से याद करेंगे हम, ऐसी वीर महिलाओं को दिल से याद करेंगे हम। जय हिंद बोल के दुनिया में भारत का नाम करेंगे हम, जय हिंद बोल के दुनिया में भारत का नाम करेंगे हम। कोई महिला कमजोर नहीं, कोई महिला कमजोर नहीं होती, ऐसा बना लिया उसने। कोई महिला कमजोर नहीं होती, ऐसा बना लिया उसने। जीवन में इस सच्चाई को हमेशा याद करेंगे, जीवन में इस सच्चाई को हमेशा याद करेंगे। बेटियों को चांद की तरह बनाओ, बेटियों की चांद की तरह ना बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे, बेटियों को चांद की तरह ना बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे। बेटियों को सूरज की तरह बनाओ कि कोई देखते ही नजरें झुका दे, बेटियों को सूरज की तरह बनाओ कि जो कोई देखे वो नजरें झुका दे। जय। और कुछ सुनाना हो तो एक और सुना सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साहब, बहुत हो बहुत ही गया अच्छा। ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सुनाया ये बोला, बहुत हो गया। ये तो अग्निहोत्री लक्ष्मीबाई सर ने कुछ कर तो दिया बोलिए। था। जब तक भूख ना लगे आए तब तक सुनाती रहिए। और आज ये जब थोड़ी जब होता का है। मामला है, थोड़ा कैलोरी बर्न होगी इससे आराम से। और कोई वक्ता नहीं है क्या? तो क्या हुआ, आप भी तो हमारी वक्ता है। ये कोई बात थोड़ा है, कोई अभाव पदार्थ नहीं है कि कोई नहीं है तो सुना, ऐसा नहीं है। सबको क्रम से बुला रहे हैं। हाँ बुलाइए। आप आगे ना, अभी आप एक और हो जाए। अगर आप जरा सा मैं कुछ तो कहें नारी तो। के ऊपर, नारी हाँ, के ऊपर सुना रही हूँ। नहीं तो हमारे प्रोफेसर पवन शर्मा जी को शुरू हो जाएंगे कमली। नहीं तो वो भी तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाते हैं, रियली बहुत ही अच्छा। जी हाँ, कहिए कहिए। नारी, नारी और वृक्ष दोनों एक जैसे होते हैं, नारी और वृक्ष
दोनों एक जैसे होते हैं। खुश हो तो दोनों फूलों की तरह सजते हैं। खुश हो तो दोनों फूलों की तरह सजते हैं। दोनों ही बढ़ते हैं और दोनों ही छटते हैं। दोनों ही बढ़ते हैं, दोनों ही छटते हैं। इनकी छांव में कितने लोग पलते हैं। इनकी छांव में कितने लोग पलते हैं। देना ही देना, देना ही देना इनकी नियति होती है। औरों की झोली भरना इनकी प्रकृति होती है। देना ही देना इनकी नियति होती है। औरों की झोली भरना इनकी प्रकृति होती है। धूप और वर्षा, धूप और वर्षा सहने की दोनों में शक्ति होती है। धूप और वर्षा दोनों की सहने की इनमें शक्ति होती है। दुख पाकर भी सह लेना, दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। नारी और वृक्ष, नारी और वृक्ष का अनमोल सा रिश्ता है। नारी और वृक्ष में अनमोल सा रिश्ता है, जो सच्ची दोस्ती से मिलता जुलता है। जो सच्ची दोस्ती से मिलता जुलता है। वृक्ष चाहते हैं कुछ पानी और खाद, वृक्ष चाहते हैं कुछ पानी और खाद। नारी चाहती है कुछ प्यार और सम्मान। नारी चाहती है कुछ प्यार और सम्मान। नारी तू सच में महान है, नारी तू सच में महान है, और निकम्मों को भी तू बना देती इंसान है। नारी तू सच में महान है, निकम्मों को भी तू बना देती इंसान है। मेरी तरफ आंख उठाना, मेरी तरफ आंख उठाना तुमको पड़ेगा भारी। मेरी तरफ आंख उठाना तुमको पड़ेगा भारी। अब इस बदलते समय में कमजोर नहीं है नारी। अब इस बदलते समय में कमजोर नहीं है नारी। क्या नहीं कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती हो, अंदाजा लगाते रहना। क्या नहीं कर सकती हो, अंदाजा लगाते रहना। अब हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे बढ़ रही है नारी। अब हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे बढ़ रही है नारी। सजने संवरने का, सजने संवरने का भी शौक रखती है वो। सजने संवरने का भी शौक रखती है वो। अपने हक की बात के लिए पीछे नहीं हटती नारी। अपने हक की बात के लिए पीछे नहीं हटती। क्या है भैया? जय हो, जय हो, जय हो। आप पे तो खजाना है मैडम, खजाना है आप। जय हो। हाँ हाँ हाँ। निकम्मों को भी बना देती है इंसान, ये बढ़िया बताया। तो मतलब शी इज ए गुड, मतलब एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब भी देती है, निकम्मों को भी बना देती है इंसान। आईफोन से कौन जुड़े हुए हैं? आईफोन से हाँ, अभी 3 हो बार जाए। जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर असुतकर हैं क्या? शीतल असुतकर, डॉक्टर शीतल असुतकर जुड़ रही है क्या आईफोन से? काइंडली इंट्रोड्यूस आईफोन, please introduce. If you want to participate actively, you can also speak on Women's Day. iPhone, kindly introduce. So before conclusion, I would like to request Momita Sharma from Kolkata. Momita, Momita ji. Momita Sharma, am I audible to you, madam? सुन नहीं रही आपकी आवाज? आज 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 महिला दिवस है। आज आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही। आपकी आवाज ही घर में नहीं सुनी जा रही, समझ लीजिए। ठीक बोल रहे हो आप। बिल्कुल सही है, और क्या, क्योंकि मतलब मशीन तो काम कर रही है, इंटरनेट तो सही है। हाँ। अब बच्चियां दोनों जुड़ी थी, दोनों में से किसी को नहीं आपने बुलाया, नहीं जुड़ पाई आज? दोनों बेटियां भी थी जुड़ी थी। एक गुरुजी के आश्रम में है। अच्छा, एक लंदन से जुड़ी थी, एक बेंगलोर से जुड़ी थी, दोनों में से कोई नहीं आई। वो एक मीटिंग में है और एक गुरुजी के आश्रम में है, वहां भी प्रोग्राम चालू है। हमारी भी पुरानी कुछ स्टूडेंट जुड़ी थी शुरू में। डॉक्टर मंजू सुहेरा जुड़ी थी 30 साल बाद, मतलब इसमें आई, फिर वो निकल गई। और वो क्या नाम, मनीषा टमटा, अभी गुरुकुल में एमडी कर रही, वो जुड़ी थी। सब तो है ही नहीं, अब तो खाली आयोजक मंडल बचे हुए हैं।
हो गया दिन। जी सर। तो फिर हमारी डॉक्टर वो श्रीमती शशि श्रोत्री कोई उपसंहार में कोई तड़क भड़क के साथ सुना दिए, शिव जी जटा विराजे हैं, ऐसा कुछ बनाइए। शंकर जी शाम तक फिर उनका शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, रुद्राभिषेक, और फिर कल शंकर जी की बरात निकलती है, नंदगाना इसको बोलते हैं हम लोग। बढ़िया सा हो जाए इसमें कि थोड़ा ये कैसा सर? वो ग्रंथ लेके बैठी हैं, ग्रंथ है उनके हाथ में। आवाज अनम्यूट करिए। मुझे भी बारात निकालने जाना है शिव जी की। हाँ, मैं भी बाराती हूँ। नहीं आपको तो घर ही में देखना है पहले। नहीं, मेरे को तो वहां जाना है। अच्छा अच्छा, कॉलेज। पूरे प्रोसेशन में। चलिए एक हाँ, भजन कॉलेज। सुन लीजिए भजन जी हाँ, जी हाँ, स्वागत। शिव जी का। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, हर पल याद करो मत उनको, दे दो बस सम्मान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सुख ही सुख में अगर जियोगे, दुख को तुम फिर समझ न सकोगे, सुख ही सुख में अगर जियोगे, दुख को फिर ना समझ सकोगे, घर आई विपदा तुम पर तो भगवन को ही तुम कोसोगे, घर आई विपदा तुम पर तो भगवन को ही तुम कोसोगे, लेते हैं परीक्षा घड़ी घड़ी, तुम ना होना परेशान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मन में ना रखना दुर्भावना, चाहे पड़े तुम्हें कुछ सहना, मन में ना रखना दुर्भावना, चाहे पड़े तुम्हें कुछ सहना, बुद्धि से तुम काम भी करना, श्रद्धा सुमन समर्पित करना, बुद्धि से तुम काम भी करना, श्रद्धा सुमन समर्पित करना, उनकी कृपा से खुल जाते हैं सबके मोक्ष के द्वार, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कहीं खुशी है कहीं पे गम है, ऐसा चक्र चलाया है, कहीं खुशी है कहीं पे गम है, ऐसा चक्र चलाया है, सुख और दुख दोनों के आंसू जिनमें प्रभु समाया है, सुख और दुख दोनों के आंसू जिनमें प्रभु समाया है, हाथ जोड़ तुम सिमरन करना, हाथ जोड़ तुम सिमरन करना, भली करेंगे राम, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, हर पल याद करो मत उनको, दे दो बस सम्मान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही कहा। भगवान भाव के भूखे हैं। वो कहते हैं ना कि वो साधन साधन द्वारा प्राप्त नहीं है, भाव द्वारा प्राप्त है। वो तो इसलिए जरा सी बात होती तो हम कहते भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने, अरे तुम ये क्यों कहते हो कि भगवान ने ऐसा किया, तुम्हारे तुमने काम ही गलत किया होगा तभी तो ऐसा हुआ, नहीं, जब तो भगवान भगवान को अच्छा नहीं सोचना चाहिए। भगवान जब अच्छा करता है तो दोनों पक्ष के अधिकार उन्हीं के हाथ में है। हमारी समझ का फर्क होता है, हम समझ नहीं पाते कि उनका निर्णय हमारे पक्ष में क्यों नहीं है, ये अलग बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय आज हमारा समय बांध दिया।
और इन्हीं सब के ममिता जी तक मेरी आवाज गई क्या अभी तक? मुश्किल ममिता जी, आज तो जी करके बोलना ही होगा तो। हमारे जितने भी आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अतिथि, सभी का हम बहुत हृदय से केवल आभार व्यक्त करते, बल्कि सभी के द्वारा प्राप्त हुई दोनों ही बोलो ना, 5 मिनट बोल शुभकामनाएं के खत्म कर दो। हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और शुभकामनाएं सबको। महाशिवरात्रि दोनों ही इसके लिए अनम्यूट बहुत करो तो। आभार है। और आपने गड़बड़ किया है, आप उनकी जो बहन जी हैं दीदी, उनको बुला लिया करके वो पोएम भी सुनाती हैं, और उनको बुलाइए वो बहन जी हॉस्पिटल में है, उनको ही दिखाने के लिए वो ओपीडी में गई। ओ माय गॉड, क्योंकि मैंने कहा उनको बुलाइए तो वो स्वयं तुरंत हाजिर हो जाएंगी, ये बेसिक फार्मूला है। अब क्योंकि दोनों ही अस्पताल में, तो बड़ी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि एक कविता होनी चाहिए थी ममिता जी हरिओम। उन लोगों की तरफ से। ममिता, हाँ, सभी को प्रणाम। आज हरिओम नहीं, आज ओम नमः शिवाय है। वुमेन्स डे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत चलिए। प्रणाम। कहाँ है आप? हॉस्पिटल में? क्लिनिक में हूँ, डेंटल क्लिनिक। अच्छा, प्रणाम सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों ही दिनों की, महाशिवरात्रि की भी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। प्रणाम। चलिए मंगल करें सब। शिवरात्रि। रात्रि अभी तो तो नहीं हमारे कर सकते। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, उनके आशीर्वचन के हम लोग आकांक्षी बने रहे, क्योंकि उनके कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम शुभ संध्या तो मिलेगी, इस समय मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं। किसी का भी ऑडियो नहीं जुड़ा है, बाकी सब हो चुके हैं। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, बहुत बहुत आभार। मातृ शक्ति की जय हो, आद्य शक्ति की जय हो, और हमारे भोलेनाथ की जय हो।